Hello, welcome to Pinto Physics. Today, I will start a lecture number 3rd, Mathematical Physics, Non-Cartesian Coordinate System. I will discuss in previous classes. I discussed in previous classes Cartesian coordinate system, plane polar coordinate system, and today I will discuss expressing a vector in a spherical polar coordinate system. Let us suppose that a vector, let us suppose that a vector in spherical polar coordinates. हम मान लेते हैं we express हम परिभाषित करेंगे कि कोई वेक्टर a vector a in spherical polar coordinates. A vector is equal to AR ER unit vector plus A theta E theta unit vector plus A phi E phi unit vector. हम जिसको इक्वेशन हम A मानते हैं, where A are A theta and A phi, where A are A theta and A phi are its components along the coordinate axis in the spherical polar coordinate system we can express a vector in terms of Cartesian coordinate system. We can also express a vector in terms its Cartesian components a vector is equal to ax I ayj azk, and this equation is B. हमने डिस्कस करना चाहा है दिस लेक्चर में कि हमारा जो है हमने प्रीवियस 2 लेक्चर कर चुका है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम क्योंकि कॉलेज में ही हमारा सारे टाइम बीत जाता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें जो टाइम मिल रहा है उस टाइम में बचा करके, लेकिन अब हम कंटिन्यू आपको वीडियो डालते रहेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक्स,
EMT, classical mechanics, and different types. But mathematical physics, it is a very important, यह बहुत ज़्यादा ही important है EMT के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल फिजिक्स सॉल्व करने के लिए. सो आई डिस्कस इन दिस चैप्टर, इसलिए हम मैथमेटिकल फिजिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए हमारा जो है नॉन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. वी एक्सप्रेस, हम परिभाषित करते हैं कि कोई वेक्टर ए है, उसको स्फेरिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए वेक्टर इक्वल टू ए आर यूनिट वेक्टर प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर. इक्वेशन फर्स्ट, where a r, a theta and a phi are its components along the coordinate axis in the spherical polar coordinate system. We can also express a vector in its Cartesian coordinate system. A vector equals to axi plus ayz plus az k vector. Now I will try to establish the relation between components of vector A in Cartesian coordinate and spherical coordinate system. Now I will trying to establish the relation between the components of the vector A, the Cartesian and spherical coordinate system, spherical polar coordinate systems कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम कह रहे हैं कि हमारे पास हमने दो वेक्टर को एक्सप्रेस किया. फर्स्ट जो हमारा वेक्टर है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, दूसरा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है. अब हम उन दोनों इक्वेशन के बीच हम कोशिश करेंगे कि दोनों का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर ए वेक्टर है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर है, दोनों के बीच जो रिलेशन है, हम उस दोनों के बीच जो है एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. माने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में हम रिलेशन स्थापित करने का कोशिश करेंगे. अब देखते हैं कि इस दोनों के बीच हम रिलेशन कैसे स्थापित करते हैं. तो सबसे पहले हम
हम रिलेशन जो स्थापित करना चाहते हैं उन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारा है ई आर यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए आर फर्स्ट सेकेंड ई थीटा डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर डॉट ए वेक्टर is equal to a theta and a phi dot a vector equal to a phi. So this is the second equation and this is the third equation. Okay. Now we substitute a vector equals to ax I plus ayj plus azk and using the results given in the margin we get. देखिए हमने दो माना था, एक हमारा ए वेक्टर हमने एक्सप्रेस किया था कि हमारा कार्टेशियन, दूसरा हमारा था वेक्टर। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो ई यूनिट वेक्टर ई आर यूनिट वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए आर वेक्टर होता है और ई थीटा यूनिट वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए थीटा होता है और ई फाई यूनिट वेक्टर डॉट ए फाई होता है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि ए वेक्टर जो है हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो ला रहे हैं उनको हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में यूज करते हैं। तो देखते हैं यूजिंग द रिजल्ट इन द मार्जिन वी गेट। अब देखिए इनमें जो यूज करेंगे, जैसे देखिए ए आर इक्वल टू हमारे पास ए वेक्टर dot er, put the value of a vector, that means ax I, ay j and az k. Okay, and product with er unit vector. ये देखिए कंसंट्रेट होकर के er dot a vector है तो हमने a vector पुट कर दिया डॉट यहाँ ई आर वेक्टर हमने लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए ए एक्स, यहाँ से देखिए ए एक्स आउटसाइड ले लीजिए ई आर डॉट आई यूनिट वेक्टर, यहाँ से आई यूनिट वेक्टर तो ए एक्स इंटू क्लोज ब्रैकेट ई आर डॉट आई वेक्टर, सिमिलरली ए वाई ई r dot j vector plus az er dot k. Okay, now ar is equals to ax or here dot product er dot I vector, that means हमारे पास ax
साइन थीटा कॉस फाई प्लस ए वाई साइन थीटा साइन फाई प्लस ए जेड कॉस थीटा। I will get this result. That means radial A vector, AR vector equals to AX sin theta cos phi plus AY sin theta sin phi plus AZ cos phi. Similarly, equation second and third, equation second and third, I will get the result A theta is equal to, here right, A theta is equal to AX cos theta cos phi plus AY cos theta sin phi plus AZ cos theta, and this is the equation number हम सारे को इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। हमारा जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का उसको आप बी मान लीजिए, इनको डी मान लीजिए, और आपके पास एक और रिजल्ट आएगा सिमिलरली में ए फाई वेक्टर ए फाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई। ये हमारा ये रिलेशन है। देखिए अब नाउ see here equation I will get, and also name here D, इसको मान लीजिए, इनको E मानिए, इनको F इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन D E F हम दोबारा लिखते हैं इक्वेशन डी एफ को। देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो आया है ए आर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ई आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा साइन फाई प्लस ए वाई साइन here cos phi, a y sin theta sin phi plus a
z cos phi, sorry, cos theta, and this is the equation D. Okay, now a theta equals to a vector dot e theta vector equal to ax cos theta cos phi a y sin, sorry, a y cos theta sin phi plus here minus of az sin theta, and also a phi is equals to minus of a x sin phi plus a y cos phi, and this is the equation number. इसको आप ई माने थे, इसको एफ। आप देख लीजिएगा कि जो प्रीवियस मैंने इक्वेशन लिखा था ए थीटा, वहां पे हमने प्लस लिख दिया होगा, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ हियर a er dot I vector, I will get the result sin theta cos phi, second er dot j vector is equal to sin theta sin phi sin theta sin phi, and er dot k vector is equal to cos theta. E theta j vector E theta, sorry, I vector equals to here cos theta cos phi cos theta cos phi, and also E theta j vector is equal to cos theta sin phi, and E theta k vector is equal to E theta k vector equal to minus of sin theta minus of sin theta and also E phi dot I vector E phi dot I vector is equal to minus of sin phi and E phi j vector equals to cos phi. Okay, here हम ये ध्यान दे के देखिए, तो हमारे पास जो ए आर वेक्टर ए आर जो आया था,
AR इक्वल टू A वेक्टर डॉट ER, दैट मींस AX हमारे पास AX, और देखिए यहाँ पे sin थीटा cos phi I प्लस AY sin थीटा sin phi प्लस AZ cos थीटा, A theta equals to A factor E theta factor equals to AX cos theta cos phi plus AY cos theta sin phi minus AZ sin theta. Now also A phi equals to minus AX sin phi plus AY cos phi. Here concentrate ER dot I equal to radial unit vector, that means sin theta I cos phi. Now ER dot J equals to sin theta sin phi ER dot K cos theta. Also E theta dot I cos theta cos phi E theta J cos theta sin phi E theta K minus sin theta. Also E phi dot I equals to minus of sin phi E phi dot J cos phi. Now I will take one question. Question. The position vector, the position vector of a particle, the position vector of a particle in Cartesian coordinates is given by r vector equals to xi I y j plus zk unit vector. Obtain its expression, obtain its expression in the spherical polar coordinate system. Polar coordinate system. Solution. Here r vector given है in this question. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया बना है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी पार्टिकल, कोई पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम में दे दिया है, जो आपको r वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk आपको दिया गया है, और आपको एक्सप्रेशन किस में फाइंड करना है? एक्सप्रेशन हमें जो फाइंड करना है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि आप हमारे पास वेयर x इक्वल्स टू,
जो हमारा होता है r sin थीटा cos फाई y इक्वल टू होता है r sin थीटा sin phi and z equals to r cos theta. ओके, अब दिस वैल्यू को पुट कर दीजिए इन दिस इक्वेशन में. तो हियर r is equal to, I'll also put the value of I j k. Also I vector equal to sin theta cos phi er unit vector plus cos theta cos phi e r e theta unit vector minus sin phi a phi unit vector and j value here यहाँ लिख दीजिए सबसे अच्छा कि i इक्वल टू क्या होता है i यूनिट वेक्टर इक्वल टू sin थीटा cos phi er प्लस cos theta cos phi e theta minus of sin theta e phi unit vector and j vector is equals to sin theta sin phi er plus cos theta sin phi plus cos theta e phi and also k vector equal to cos theta er minus of sin theta e theta unit vector. ओके, यहाँ पे जो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, i का वैल्यू, j का वैल्यू, k का वैल्यू पता है हमें. sin थीटा cos phi er वेक्टर प्लस cos theta cos phi e theta वेक्टर माइनस sin theta e phi वेक्टर and also j equal to sin theta sin phi er unit vector plus cos theta sin phi plus cos theta e phi vector and k vector equals to cos theta er unit vector minus sin theta e theta unit vector. Now after this I will calculate the position vector. So हमें सॉल्यूशन करना है, तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए r वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk. पुट द वैल्यू ऑफ ijk इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ xi and yj and zk इन इक्वेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर में हम पुट कर देते हैं, तो देखिए x का वैल्यू क्या होता है r sin थीटा cos phi. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हैं. तो x इक्वल टू क्या होगा r sin थीटा cos phi r यूनिट वेक्टर
वहां से लिखिए साइन थीटा कॉस फाई प्लस ई आर यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ई थीटा यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ साइन थीटा ई फाई यूनिट वेक्टर ओके प्लस y put the value r sin theta sin phi और put the value of j का वैल्यू sin theta sin phi e r unit vector plus cos theta sin phi e theta unit vector plus cos theta e phi unit vector. Also that means r cos theta and value of k cos theta er minus of sin theta e theta. Okay. Now I will calculate it. R sin theta sin phi and sin theta cos phi. That means R sin square theta cos square phi e r unit vector so this equation is common r sin square theta cos square phi cos square phi plus sin square theta sin square phi e r unit vector plus here r cos square that means cos square theta हमने इससे कॉमन लिया r e r unit vector. Now प्लस थीटा के लिए अब देखिए यहाँ से देखिए साइन r e to the power थीटा e थीटा यूनिट वेक्टर इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो r साइन थीटा cos थीटा sin cos square phi
प्लस, आप इनसे देखिए, इनसे तो क्या होगा, माइनस ऑफ आर साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर सॉरी फाई प्लस सॉरी माइनस ऑफ cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin theta and also R if phi unit vector now we multiply it with this R sin theta cos phi, that means first of all R sin theta cos phi, sin theta cos phi sin phi cos phi minus of R here sin square theta cos phi यहाँ पे हमारा पास साइन फाई होगा, तो फिर हमारे पास साइन थीटा cos साइन स्क्वायर थीटा वही मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ आर साइन थीटा साइन फाई। नाउ दिस इज
cancel out. So R vector is equals to R ER unit vector, and now sin square theta also common sin square theta, then cos square plus sin square, फिर sin square theta cos square theta 1, so here 1 plus here common sin theta cos theta, sin theta cos theta, sin theta cos theta, sin square 5 cos square 5 1 और sin theta cos theta 0, r e phi 0. That means r unit r vector equals to r e r unit vector. Okay, so position vector I will get the result in terms of a spherical polar coordinate r vector in a spherical polar coordinate system. R vector equals to r e r unit vector this equation is the spherical, this equation is the spherical polar coordinate system, polar coordinate system. Now after this I will discuss let us now determine let us now determine the expression of the basis factor, the expression of the basis factors, the expressions of the basis factors ER, E theta and E phi, since ER is the unit vector in the direction of increasing
R, increasing R, that is in the direction of position vector, in the direction of position vector of point P. Here AR equal to A, AR unit vector equals to R vector upon में R unit vector का mode. And now xi yj plus zk upon R. So R, put the value of x, that means R sin theta cos phi, sin theta cos phi I plus R sin theta sin phi j plus cos theta k देखिए हमने एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम यहाँ पे हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि लेट अस नाउ टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ बेसिस वेक्टर। हम किसका एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं? हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि दो बेसिस वेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिस वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं जो हमारे पास ई आर यूनिट बेसिस वेक्टर को ई आर वेक्टर अपॉन में आर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं अपॉन हमारे पास क्या है कि जो वैल्यू है उनसे आर से हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। तो देखिए यहाँ पे भी आर है तो आर से डिवाइड दीजिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे प्लस cos theta k. That means this is the basis vector. This is the basis vector of ER. AR. ER is the basis vector. Now, here phi since the azimuthal angle phi in the spherical and cylindrical coordinate system
in the same, the unit vector E phi, the unit vector E phi is also the same, so we can write E phi unit vector equals to minus of sin phi I plus cos phi j नोट। देखिए यहाँ पे हम लिखने क्या जा रहा है कि सिंस द अजीमुथल एंगल फाई इन स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द सेम, जो हमारे पास जो है अजीमुथल एंगल जो फाई होता है, अजीमुथल एंगल जो फाई है, हम करें जो अजीमुथल एंगल फाई इन स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इन द सेम, द यूनिट वेक्टर ई फाई इज आल्सो द सेम। अगर अजीमुथल एंगल जो है सेम होगा सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यूनिट वेक्टर ई फाई आल्सो सेम होगा, इसीलिए ई फाई इक्वल्स टू माइनस sin फाई आई प्लस cos फाई जे। नाउ नोट जो ई आर, note that ER, E theta and E phi, note that ER, E theta and E phi form an orthogonal, form an orthogonal right handed basis vector in the spherical polar coordinate system, basis vector in spherical polar coordinate systems, polar coordinate system। Therefore A theta unit vector equal to E phi into AR, so put the value of E phi, that means minus of sin phi I plus cos phi j into ER unit vector, I also known that sin theta cos phi I plus sin theta sin phi j plus cos theta k, okay, and multiplying with this, E theta unit vector is equal to A phi
sin phi I plus cos phi j into ER. That means sin theta cos phi I plus sin theta sin phi j plus cos theta k. Okay, I will product both. That means this to this and this to this. Here E phi into ER multiplying with this, multiply this, that is minus of sin theta sin phi cos phi I dot I will get the result of 0. I dot jk, so 0I plus minus plus minus minus sin theta sin square phi k plus minus of sin phi and cos theta I k j I k I and this is the plus sign and also minus of this to this. This to this, that means j I minus cos sin theta cos square phi k, here j 0 k j or k I, that means cos theta cos phi j k I. Okay, so this is the common with this. Minus of sin theta k, that means this and this one, and also plus of cos theta cos phi I
plus cos theta sin phi j, that means e theta, unit vector equals to minus of cos theta cos phi I plus cos theta sin phi j minus of sin theta k unit vector and this is the basis vector er, e theta and e phi. And now we can obtain here e theta and also written as e phi is equals to minus of sin phi I plus cos phi j, and also er unit vector, so er unit vector is equal to written as er unit vector equals to sin theta cos phi I sin theta cos phi I plus sin theta sin phi j sin theta sin phi j plus cos theta k plus cos theta k. Okay, now this is the basis vector. We can obtain the inverse now. We can obtain the inverse. We can obtain the inverse transformation by doing some algebra before studying further, before studying further. For this we have to simply substitute the expression for er, e theta and e phi.
if I in the flowing equations, in the flowing equations and verify that these are indeed satisfied, indeed satisfied. So I vector is equals to sine theta cos phi er unit vector plus cos theta cos phi j unit vector e theta unit vector minus of sin theta d phi unit vector, and j equals to sin theta sin phi er unit vector plus cos theta sin phi e theta unit vector plus cos theta e phi unit vector, and also k unit vector equals to cos theta er minus of sin theta e theta unit vector, and this equation is very important, and this we can obtain the inverse transformation by doing some algebra before studying further. For this we have to simply substitute the expression of for er e theta and phi in the following equation and verify that these are the indeed satisfied. I vector equals to sin theta cos phi er plus cos theta cos phi e theta minus sin theta e phi, and j vector equals to sin theta sin phi er plus cos theta cos sin phi e theta plus cos theta e phi, and k vector equals to cos theta er minus sin theta e theta. Now the basis factor in a spherical, the basis factor in a spherical polar and Cartesian coordinate system, the basis factors in a spherical and the Cartesian coordinate system, and the Cartesian coordinate system
systems. By definition, by definition, by definition, AR unit vector, unit vector, unit vector in the direction of increasing R, in the direction of increasing, in the direction of increasing in the direction of increasing R, normal to the spherical surface R equals to constant. A theta equal to unit vector in the direction of unit vector in the direction of increasing, unit vector in the direction of increasing theta normal to the one surface, one surface theta equals to constant, and E phi equal to unit vector in the direction of increasing phi, unit vector in the direction of increasing, in the direction of increasing phi, and normal to the half plane, increasing phi, and normal to the half plane, normal to the half plane, phi is equals to constant. Phi is equal to constant. Here, define of a basis vector. Generally, basis vector in a spherical and Cartesian coordinate system. Here equals unit vector in increasing of increasing R normal to the spherical surface R equals to constant. E theta unit vector in the direction of increasing theta normal to the one surface theta equals to constant. Unit vector in the direction of increasing phi normal to the half plane phi equals to constant. So the basis vectors in a spherical coordinate system and polar coordinate system, the basis vector in a spherical coordinate system and polar coordinate system are related as
the basis vector, the basis vectors in the spherical polar coordinate system and the Cartesian coordinate system are related as follows. AR equal to sin theta sin phi I plus sin theta sin phi j plus cos theta k unit vector and E theta unit vector equals to cos theta cos phi I plus cos theta sin phi j minus of sin theta k and E phi equals to minus of sin theta I plus cos theta k. This is the basis vector. This is the basis unit vector and I unit vector is equal to sin theta cos phi er plus cos theta cos phi e theta unit vector minus of sin phi e phi unit vector. Now also j vector equal to sin theta sin phi er plus cos theta sin phi e theta plus cos theta e theta and k equal to cos theta er minus sin theta e theta cos theta er minus sin theta e theta. This is the VBI. This is the VBI. This is the VBI equation for non-Cartesian coordinate system in a spherical polar coordinate system. This is the important formula. The basis vector is the basic. और ये सारे ही आगे आपको काम देते चले, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए. थैंक यू फॉर दिस टुडे and next day also we provide a next lecture. For this time I in the class. So thank you all of you.